So what we discussed? We discussed that capacitance is given by charge per unit potential. How much charge has to be given to a body so that its potential rises by 1 volt is defined as the capacitance of the body, right? Suppose if I am saying the capacitance of this body is 100, it means 100 coulombs have been given in order to increase its potential by 1 volt, right? Now we will discuss the SI unit of capacitance, right? So C is equals to Q by V. Q is in coulomb, so 1 coulomb upon 1 volt. This 1 coulomb upon 1 volt is called as 1 farad, right? 1 farad is equals to 1 coulomb per volt. Rather than saying coulomb per volt again and again, we name it as farad on the name of Michael Faraday, right? Farad. But if we talk about the practical units, this 1 farad is very big unit of capacitance. See, practically you can never get 1 farad. 1 farad is very big unit, so you cannot say that we will have something and some conductor whose capacitance is 1 farad. So what are the practical units? Practical units are microfarad, which is 10 raised to power minus 6 farad, or picofarad. Picofarad is 10 raised to power minus 12 farad. These are two practical units, right? 1 farad is so big that on earth you cannot have 1 farad. It is that big. So generally जितने भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेज होते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसेज होते हैं, उसमें हम माइक्रोफेराड, से फॉर फैन में वी आर यूजिंग अ कैपेसिटर ऑफ 3 माइक्रोफेराड. सो 3 माइक्रोफेराड मीन्स 3 into 10 raised to power minus 6. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग योर फोन, व्हेन यू आर यूजिंग कंप्यूटर, व्हेन यू आर यूजिंग लैपटॉप, टैब, एनीथिंग, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, टीवी एंड all those have capacitors in the terms of picofarad, very small capacitance, right? But that much is able to store charge effectively. So all the electronic circuits generally have capacitors in picofarad, and all the electrical circuits have capacitance in 10 raised to power minus 6, that is microfarad. But generally speaking 1 farad is very big unit. So जितने भी आप numericals देखोगे, you will never ever find farad, you will always find microfarad or picofarad. So generally for numericals also we are using these two practical units, right? Now we'll understand the concept of making a capacitor. How do we make a capacitor? अभी हमने बोल दिया ये capacitor इसमें charge को store कर लिया, but how are we charging? How are we sending charge in a capacitor? So just now we have learned that C is equals to Q by V. So in order to design a good capacitor, what we should do? We should design it in such a way कि उसका charge तो बहुत हो उसमें. It should be able to hold charge without increasing its potential much. 1 volt तो that is the basic. The amount of charge required to increase its potential by 1 volt is the capacity or the capacitance of the electrical conductor. But एक अच्छा capacitor, a better capacitor is one way whose potential should not rise much. Say suppose you have taken 2 container and you have to fill up 100 liter in both. ठीक है, एक कंटेनर में आपने 100 लीटर फिल करने का कोशिश किया and by 70 लीटर आते आते ही it is full. Now you cannot put remaining 100 लीटर. और एक दूसरा बकेट है, दूसरा कंटेनर है, उसमें आपने 100 लीटर फिल किया. 100 लीटर फिल करने के बाद भी उसमें आधा स्पेस रह गया. 100 लीटर फिल करने के बाद भी उसमें आधा स्पेस रह गया और तुम उसमें और 100 लीटर डाल सकते हो. सो विच इज अ बेटर कंटेनर? द वन who can hold more water without increasing its potential. So we need a capacitor who can hold more charge without increasing its potential much, because if we increase potential beyond a certain limit, then it will break the insulation property of a conductor. Now before discussing this, we'll discuss about the insulating property of a conductor. Say suppose this is a conductor, ये कोई conductor है and you have given it charge Q, right? You have charged this conductor by charge Q. Say the charge immediately appeared on the surface.
you have given it 10 coulomb, then you increase it to 20 coulomb, it accommodated the charge. Then you have increased the charge to 100 coulomb, it accommodated the charge. जहां जहां भी आ सकता है, जितना repulsion हो सकता है, they will repel each other, but the surface will occupy 100 coulomb of charge. And as you are increasing charge, potential is also increasing. तो इसका potential कितना हो गया? 100 volt. ठीक है. If you increase the charge further, what will happen? Charge will start leaking. अभी आपको एक बकेट दिया, बकेट का स्टोरेज है 25 एंड यू आर फिलिंग इट विथ 30 लीटर. सो व्हाट विल हैपन? रिमेनिंग 5 लीटर कहां जाने वाला है? बाहर जाने वाला है, राइट? इट स्टार्ट्स लीकिंग, इट स्टार्ट्स स्पिलिंग द वाटर अराउंड. Similarly, for any conductor, you can give charge, it will increase the potential, increase beyond a certain limit. ऐसा नहीं किसी भी कंडक्टर में आप infinite charge स्टोर कर सकते हो. That depends on what geometry of the conductor you are taking. Right? अभी हमने इतना चार्ज दे दिया, अभी इसके बाद चार्ज क्यों नहीं जाता? Why? Like how does it breaks the insulation property? That we are going to discuss. Right? So when you have given it 100 volts, what is around? Suppose it is kept in air, what is around? Air molecules are around. So suppose it is surrounded by the air molecules, right? Air is a very, very good insulator. Air is a very good insulator. Thank God air is a good insulator. Otherwise, it would have become a difficult situation. अगर air insulator नहीं होती तो it would have been conducting. You can imagine the situation, right? So air is a very, very good insulator. Or you say it is a very good dielectric medium. Dielectric means जो electric नहीं है, dielectric medium, right? Air molecules act as a perfect insulator and they do not break easily. कोई भी insulator obviously it is not able to give its electrons so easily. So हमने कहा ये air molecule है, nucleus, electrons, nucleus, electrons, nucleus, electrons, nucleus and electrons. Now when this is highly charged, इसको हमने बहुत ज्यादा चार्ज किया, 100 volts चार्ज दे दिया, तो ये जितने भी हैं, say earlier when the charge was less, ये जो एयर के मॉलिक्यूल थे, ये एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में देयर इज अट्रैक्शन, इट विल नॉट लीव द ऑर्बिट एंड कम आउट. So there was perfect attraction here and this plus was trying to pull this electron of air. Every positive charge will try to attract the electron of the air molecule, right? But because it is tightly bound, force उतना नहीं है, तो जब चार्ज कम था तो ये अट्रैक्ट कर रहा था और जब हमने चार्ज बढ़ा दिया तो 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं. Now 10 आर अट्रैक्टिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये 10 के 10 मिलके इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन? द मॉलिक्यूल ऑफ एयर विल स्प्लिट इनटू व्हाट? आयंस. अभी ये जो था पार्टिकल एयर का, ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे चार्जेस ने मिलके उसको पुल किया. दे हैव अट्रैक्टेड इट एंड व्हेन दे हैव अट्रैक्टेड इट they have got a -1 charge and the air particle has got a +1 charge. Agreed? ये 10 चार्जेस ने मिलके इलेक्ट्रॉन जो था, एयर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन था, they have attracted it. The moment they have taken it, they will get a negative charge. And the moment the air molecule leaves the electron, it will get a plus charge. Right? Suppose जब हम इसको चार्ज कर रहे थे, it was 80 volts पे, charge was increasing, then potential rise to 90 volts, then potential rise to 100 volts, then the moment we give it 101 volts, it starts leaking. For example, general example, जैसे ही मैंने 100 से 101 next charge भेजा, तो what I see, it gets a charge of -1 because it has taken the electron of the air molecule. और वो +1 कहाँ चला गया? It has broken the insulating property of air. एयर के insulating property को इसने ब्रेक कर दिया और इसको आयन में कन्वर्ट कर दिया. So जैसे ही मैंने इसको 101 चार्जेस दिए, वो 101 में से कैन वी से कि ये बाहर चला गया, लीक हो गया, बिकॉज दे हैव अट्रैक्टेड. दिस इज -1. तो ये क्या हुआ? 101 जो हुआ था, इसको -1 कर दो, अब यहाँ फिर से 100 वोल्ट्स हो गया. अभी आप फिर से एक एक्स्ट्रा चार्ज दे दो, 101. जैसे ही 101 देगा तो ये वाले जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन
and they will become -1, and this electron, this atom will become +1. So every time you are increasing the charge, एक एक करके आप चार्ज बढ़ा रहे हो, उतना ही चार्ज कहाँ जा रहा है, लीक हो रहा है, and it is breaking the insulating property of the air. That is how the shape, the geometry of the conductor has a perfect upper limit up to which it can hold charge, and beyond which it will start breaking the insulating property of the dielectric medium, whatever medium it is surrounded with. Is that clear? Should we proceed? A conductor, on a conductor we can give charge up to a certain limit. Beyond that limit it will start to break the insulating property of the medium. जितना हम चार्ज देते जा रहे हैं, हर बार ये चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है. हमने 101 किया, लीक हो गया एक, फिर से 100 हो गया, फिर हमने 105 किया तो यहाँ पे 5 लीक हो गया. जितना लीक हुआ उतने ही मॉलिक्यूल्स, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, दे विल स्टार्ट स्प्लिटिंग लाइक अ आयन, राइट. सो दैट इज हाउ दिस tells us that beyond a certain limit for a conductor, the insulating medium which is surrounded, it gets start converting into ions. हम बोलते हैं चार्ज लीक हो रहा है, 110 दे दो, आपको यहाँ पे 10 प्लस मिलेंगे. तो बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, द वे वाटर, अगर हमने 25 लीटर से ज्यादा डाला तो वो कहाँ मिलेगा, हमें बाहर मिलेगा. सिमिलरली बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट इफ यू गिव चार्ज, वेयर यू विल फाउंड दैट चार्ज, अराउंड इट, राइट.